2 bar in water. Determine molar concentration of argon in water. We have to determine molar concentration of argon in water when it is stored above water at 10 bar pressure. So let's try to solve this question. Let us find the solution of this question. So what is given over here? KH is given. KH is equal to 40 K bar, means 40 into 1000 bar. So this will be equal to 40,000 bar, isn't it? So this is given, and we will use the concept of Henry law. So according to Henry law, partial pressure of any gas exerted by any gas, it is directly proportional to mole fraction of that gas. It is directly proportional to mole fraction of that gas, isn't it? तो यहाँ पे ऑर्गन की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गन. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर खत्म करेंगे, सो P विल बी इक्वल टू KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन. सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, विच एम्प्लाइज अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन निकालेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी कितना? P डिवाइडेड बाय KH. तो बस दीज कंडीशंस आर गिवन. P भी गिवन है, KH भी गिवन है. व्हाट इज P? P is given, it is 10 ATM, 10 bar, sorry, not ATM, 10 bar. So this is 10 divided by 40,000. तो यहाँ भी बार है और KH का वैल्यू भी, यूनिट भी बार है, बार से बार कैंसिल हो जाएगा. वी नो दैट दिस मोल फ्रैक्शन इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपका यूनिट नहीं आएगा. सो इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, तो यहाँ से आपका जो आएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी 2.5 into 10 to the power minus 4. सो ये आपका मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गन. हमें मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है, हमें कुछ और निकालना है. बट वी हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स, इजंट इट? दैट्स मोलर कंसंट्रेशन. तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डिटरमाइन करेंगे. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करूंगा, सो दैट आई हैव अ स्पेस, लिटिल बिट ऑफ स्पेस ओवर हियर. तो यहाँ से मैं इसको रब करूंगा, मुझे थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है, इजंट इट? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन किसके बराबर होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन को निकालेंगे. दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन divided by total number of moles, that's number of moles of argon plus number of moles of water, isn't it? Now we know that, what we know, the number of moles of the argon, mole fraction of argon comes out to be very, very less. Therefore this quantity is very, very less, means number of moles of the argon, they are very, very less. This term is very, very less compared to the number of moles of water. So in the denominator, if this quantity is less, you can neglect this quantity. So this will come out to be number of moles of argon divided by number of moles of water, isn't it? तो यहाँ से आएगा number of moles of argon and number of moles of water. Now you know that in 1 liter of water, how many number of moles? अगर हम 1 लीटर वाटर की बात करेंगे, 1 liter of water contains how many moles? 55.5. तो यहाँ पे आपको 55.5 moles मिलेंगे. So this will be equal to your this mole fraction of argon. तो बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन निकालना है. दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो बस मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन वी नो कितना है. मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन ये हमने अभी निकाला था, इट वाज 2.5 into 10 to the power minus 4 multiplied by number of moles of water, that's 55.5, isn't it? Multiplied by 55.5. तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 1.39 into 10 to the power minus 2 moles. अगर आप इस पावर को खत्म करना चाहते हो, इफ यू वांट टू, अगर आप इस पावर को खत्म करना चाहते हो, तो दिस विल कम आउट टू बी 0.039, isn't it, moles? So this and this, they are the answers. Number of moles of argon, that's molar concentration of argon. Either this will be the correct answer, or you can further solve it, you can get this type of answer, isn't it? So these are the correct answers for this question. Now let us move to the next question. There is one more question which has been asked by the same student. So the question is, this is the question. So the question is, KH, that's Henry law constant. This is the Henry law constant. KH of carbon dioxide in water at 298 Kelvin is 5/3 K bar. So KH for carbon dioxide in water
at 298 Kelvin is 5/3 K bar. तो मतलब के एच दिया गया है, it is equal to 5/3 K bar. K means kilo bar. So this means which is equal to 5/3 multiplied by 1000 bar, isn't it? तो यहाँ से आपको ये मिलेगा 5/3 into 10 raised to power 3 bar, isn't it? So if the pressure is also given, P is equal to 0.01 bar, then you have to determine mole fraction. Mole fraction निकालना है, we can apply Henry law. So according to Henry law, partial pressure of a gas, it is equal to Henry law constant multiplied by mole fraction. Mole fraction of this gas मतलब mole fraction of carbon dioxide. This will be the partial pressure of carbon dioxide. तो ये चीज आपको निकालनी है. You have to determine this quantity. इस quantity को निकालना है. अगर इस क्वांटिटी को निकालना है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय केएच. व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? पार्शियल प्रेशर इज 0.01 बार, इजंट इट? दिस इज 0.01 बार. तो यूनिट्स को साथ साथ लिखना है, बिकॉज हमें देखना है कि मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यहाँ पे बार और बार कैंसिल होना चाहिए. डिवाइडेड बाय केएच. व्हाट्स केएच इक्वल टू? इट्स इक्वल टू 5/3 into 1000, that is 10 raised to power 3 bar. इसको अगर सॉल्व करेंगे, बार से बार कैंसिल हो जाएगा. इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा, isn't it? You will get the answer. The answer will be, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, तब तक आप भी इसको सॉल्व करो. 6 into 10 raised to power, you will get this. On solving, you will get 6 into 10 raised to power minus 6. So this is the mole fraction. This is the solution of question number 7. So we have one more question which has been asked by the same student. That's mole fraction of a certain gas. This is certain gas. Let the gas is X. इसका mole fraction in water is 0.001 at STP. Determine KH. This is very important question. मतलब over here we are given this mole fraction of a gas. Certain gas, it is given 0.001, isn't it? And we have to determine KH. KH we have to determine. What other thing we should know? We should know partial pressure of this gas, isn't it? Partial pressure of this gas X. So since the condition is given, what is the condition given? Condition is given STP. So we know that at STP, what is the pressure? What is the pressure at STP? The pressure at STP is 1 atm, isn't it? The pressure at STP is 1 atm. We know that the pressure at STP is 1 atm. So again, if this is given in atm, this will not be, there will not be the unit. So because this is a mole fraction, so we can utilize this concept that is partial pressure of a gas X, it is equal to KH into mole fraction of that gas, isn't it? That is gas X. So बस इस mole fraction, this we know this, ये KH निकालना है. We know this partial pressure at STP, it's equal to 1 atm. तो यहाँ पे आप 1 atm लिखो. This will be equal to KH. KH आपको निकालना है. तो KH निकालना है, मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन इज 0.001, isn't it? So KH will be equal to 1 divided by 0.001, isn't it? So this will be equal to 1000 divided by 1. So this will be equal to 10 raised to power 3. So KH comes out to be 10 raised to power 3. तो इसका यूनिट जो है, this is atmosphere. So this will be in atm. So this is the correct answer of the question. I hope you might have got the answer of the questions. Thank you for being with me and thanks for watching. Like, share and subscribe channel that's Chem Lover. Thank you.